Actually, today is my, I think that last class, my syllabus is complete. And if you have any query or any question, I will be sorting out the issue. But again, you have to tell me that which topic is uncovered, which topic is pending, and if you require to have a discussion on some particular topic, on some particular that, part of the syllabus, then we can have another classes also. As per my knowledge, as per my awareness, I have completed almost every part of the syllabus and every corner of the syllabus that I have completed. Uh, if you have some confusion, you can you please let me know that this topic is uncovered, so that I can cover that. I think every student might have gone through the syllabus. And again, one thing you should note that hopefully the exam will be, might be you will be aware about that or not. The exam will be through objective type questions may be there. Objective type questions may be there due to the pandemic situation. Objective type questions may be there. So you should be prepared not only for the descriptive, but you should be prepared for the objective type of questions also. And our test will be on next Wednesday. Our test will be on next, sorry, Wednesday, not Thursday. Uh, Thursday, next Thursday, the test will be there of first three units. If you require some that material, as I told earlier also, that I will be sharing that material with you. But again, whatever material I am sharing, that is for the guideline, that is for your awareness. You have to check, or you need to get more information through the books, magazines, or through the different source of information. You should go through that also. And yes, the some of the links are available on university website, where you can find the books also, you can find that the material also. State government link is also there, and you have to go through, because in the future that we are going to change, organizations are changing, we are also changing, and you people are also changing. Because here you that in the future, according to new education policy, that more that task based experience should be there. Task based work should be there. Because whatever we are getting in the present time in the management subject, the students are less interested to do the research. But again, research is the basic aspect, or research is the nerve of any business or any work. You should go for some research topic, or some particular field, or some in some area. You should go for those aspects that will be helpful. Again, some of the students that we have discussed about the international project, that if suppose one question is there, that six or seven students they were interested in that international project, जो हमने रूरल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट के लिए हमने आपसे बात की थी. आई डिस्कस विद यू दैट अबाउट द रूरल मार्केटिंग प्रोजेक्ट. आई हैव वन क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक, दैट इफ सपोज कोई हमें असाइनमेंट मिले एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, that is not part of our syllabus, will you able to do that? Understood my question or not? समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? सर कि अगर कोई प्रोजेक्ट रहेगा वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहेगा तो हम इंटरेस्टेड है कि नहीं?
नहीं तो इंटरेस्टेड रहेंगे आप, नहीं रहेंगे? जो मैं आपसे बात कर रहा था इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की, जो मैंने एक्चुअली नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास रूरल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, और एंटरप्रेन्योरशिप दूसरा सब्जेक्ट है। अब मान लिया हमने पहले उस कंपनी में एफर्ट किया टैलेंटो में, तो टैलेंटो में मैं आपको एक मिनट वो प्रोसेस बता देता हूँ। Just a minute। क्योंकि आज ज़्यादा उसमें है नहीं।
ये जो आप देख रहे हैं, that is that organization with which we have contact or we are contacting this organization. साइट थोड़ी सी धीरे चल रही है. एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैंने आप लोगों से बात की थी तो मैंने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया था. तो ये प्रोजेक्ट ये मैंने आपसे कभी डिस्कस किया है इस बारे में, दिखाया है आपको? नो सर. नो सर. ठीक है. तो ये जो पहले मैंने आप लोगों से प्रपोजल मांगे थे, तो ये इसमें क्या था कि मैंने ये इस ऑर्गेनाइजेशन से क्योंकि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में रूरल मार्केटिंग पढ़ाता हूं, तो रूरल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मतलब मैंने यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड किया अपने आप को. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपने पहले भी मेरे से पूछा था कि भाई क्या कहते हैं, ये लोग पैसे नहीं लेते हैं, पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं. तो इसके अंदर मैंने 2 कोर्स डाले, जो आपका रूरल मार्केटिंग कोर्स था और ये कोर्स था. जब मैंने रूरल मार्केटिंग कोर्स में जब मैंने आपके सब्जेक्ट में डाले, तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, मतलब ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए बात है, आगे भी आपके काम आ सकता है. ये एक प्लेटफॉर्म है विच इज कनेक्टिंग द इंडस्ट्रीज एज वेल एज कनेक्टिंग द academic section or the universities, as well as it is also connecting the teachers. 3 parts are there. One is the university or the academic institute. Second is the industry, and the third is the student. 3 parts are there: teacher, student, or industry, or the university, or as well as the student. Here 3 parts are there. And in this area, what is there? One thing is there, when the organization is there, this is a particular area, and in this, as I discussed that I applied for that, and this company was ready to have a contract with us. Then I accepted this proposal, as it is mentioned here. There, I accepted this proposal. After that, the meeting was there. After that, the meeting was held. But again, when the meeting was held, in this meeting, when I discussed with them about my class or about my students, then some of the students were interested to move for this type of project. I discussed with the company. And after that, the company asked me, please send your syllabus, because agreement was there. We were ready to move over there. But when I sent the syllabus of rural marketing, then the company identified that our syllabus compatibility is not associated with their objective. ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का था, कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था, वो हमारे सिलेबस से दैट शुड बी मैचिंग विद आवर सिलेबस. Reason is that whenever a student is there in the class, that student require the practical aspect. The teacher is giving him or her
the theoretical knowledge or the knowledge associated with the books, but the students are not going for any practical in the class. And this is the objective of this particular platform. This platform is again associated with that what you are interested in. Here I sent the proposal, but interview was there, discussion was there, but the organization rejected our proposal. The reason was there that our syllabus match was not there. Then after that, what I did, that I tried for some another issue over there. The another issue was there. Here I tried for another course, that is the marketing research and organization behavior. What is this here that you see here? Two problems, we can work on the two problems. Here the card matlab that there is the two problem we can work over there. I propose my problem that it is associated with my course, and I can tackle at least only number of the students that they told us that that it is associated with a particular problem. We have to solve the problem of the company. Here the objective of this platform is that you are solving the objective of the company, and the students who are going in the class, through their theoretical aspect or through their classroom teaching, they will be getting the practical knowledge. But again, उस project में we were not successful, but again fortunately or unfortunately, when I applied in this course over there I find the number of proposal here. I got number of proposal in the marketing, that you see that that is unplugged marketing, the target audience marketing. Suppose मैं आपको एक that I let me show you, as well as the optimization smartphone behavior, and this is associated with the pricing strategy strategy over there. Here suppose here that if we go for this particular project, unplugged marketing क्या है कि ये एक particular tool है that is associated with. Now the company are giving their issues, giving their problem here on this platform, and the individuals are or the universities are giving their information on this platform कि भाई हम अपने क्लास में अपने कोर्स में ये चीज पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमें अपने स्टूडेंट के अपलिफ्टमेंट के लिए या स्टूडेंट की अवेयरनेस के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो स्टूडेंट उनके प्लेटफॉर्म पे जाके वर्क कर पाए. तो हुआ क्या कि अब इसके बाद नाउ that they are the company has given this type of information. अब unplug क्या है? That is a small device. This is a small device, एक छोटा सा device है that where which is working for the purpose of that when you are using the mobile. When you are using the mobile, the individual is that so many apps are coming in the mobile, and so that unintentionally the individual is यूसेज ऑफ टाइम इज देयर, मोर यूसेज ऑफ. आपने फेसबुक खोला, फेसबुक के साथ दो तीन ऐप और खुल के आ गई, और फेसबुक खोला तो आपने कि जो आपकी एप्स हैं वो अपने आप ही दैट स्टार्टेड कमिंग आउट, और उसके आने से क्या होगा दैट योर टाइम इज वेस्टेज ओवर देयर, योर टाइम इज वेस्टिंग ओवर देयर. तो ये जो एक डिवाइस है दैट हियर यू कैन सी दैट डिवाइस, ये स्मॉल डिवाइस है जो आपके जो ब्लूटूथ की तरह है. इट इज लाइक द ब्लूटूथ दैट यू आर इंसर्टिंग इट इन द मोबाइल, एंड इट इज सेविंग द ड्रेनेज ऑफ द बैटरी एंड ड्रेनेज ऑफ योर टाइम. It is saving time, and the cost of this particular product is approximately $25 to $50. So $25 of one product, and that is another advanced product. तो हुआ क्या कि जब हमने इस कंपनी के लिए जब हमने अप्लाई किया, दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्मार्ट सिटी. हियर यू विल फाइंड दैट. ये एक डिवाइस है that how you will be that is a key, then how you will be getting this over here.
Our attention is being mined for profit. Big tech corporations are doing everything in their power to keep you on screen. They fight over your attention. About the only thing they're interested in is your data. Their only measure for success is the amount of time you spend in their app. They don't care about you. They don't care about your well-being. And they certainly don't care whether you're spending your time in the way you would like to spend it. We believe it's time we take back control over our technology. It's time to resist the big tech corporations. It's time to push back on the digital distractions they seduce us with. It's time to unplug. With the unplug key and software, you will have the power to transform your current smartphone into a distraction-free device. Unplug works as your home screen. It has two modes, a normal mode in which you have access to all of your apps, and a focus mode, in which distracting apps and notifications of your choice are blocked. The physical key makes accessing distracting apps a conscious choice. It also allows you to decide how big the barrier to digital distraction should be. In short, you're in control. We set out to redefine our relationship with technology. Time is our most valuable resource, and big tech corporations are stealing it away at a rapid pace. Let's take back our time. Let's spend it in a more meaningful way. Unplug. Less distraction, more life.
Hi, I'm Alex Wade, Director of Marketing for OMIA's Region Americas. My team is based out of our office in Cincinnati, Ohio, and responsible for developing and delivering marketing campaigns for the region. In this video, I want to provide some additional context to this particular challenge. Being that our small team is based in the US and has not lived in Latin America, has not been immersed in the culture of these local markets, it's often difficult to feel confident with our choices on channel and messaging. Of course, we have sales and operations colleagues in Latin America we can rely on for feedback, which is helpful, but we don't want to solely rely on them all the time. OMIA is a producer of industrial minerals, mainly fillers and pigments derived from calcium carbonate and dolomite, and a worldwide distributor of specialty chemicals. OMIA's products are manufactured for a variety of major B2B markets around the world, such as packaging, automotive, building materials, agriculture, and food production, just to name a few. While these industries are global in nature, much of the buying decision and influence happens on the local level, which requires us as marketers to consider the local nuances and cultural differences when marketing our products. In this particular challenge, students will be asked to develop customer personas, a local channel analysis, and propose a channel mix for OMIA's major markets in Latin America. The channel analysis and proposal mix should be heavily influenced by what the students outline in the customer personas. Preferences in consuming and receiving information, and how So Hi, I'm Alex Wade, Director of Marketing for OMIA's Region Americas. My team is based out of our office in Cincinnati, Ohio, and responsible for developing and delivering marketing campaigns. ये आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो whatever our planning was. मेरा टाइम आज इसी में पास हो गया. So planning was this, we can get to the proposal and the student will be getting benefit. अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन ये किया था कि अगर सपोज अगर मान लिया कोई हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट लें और वो सब्जेक्ट आपका है नहीं, वो सब्जेक्ट आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते नहीं, although the company will be giving us the proposal only when our subject matching is there, the subject compatibility is there, otherwise they will not giving us the project. तो ऐसी सिचुएशन में
पहली बात तो देन शुड वी टेक द रिस्क और नॉट। अगर आपको कहा जाए कि भी हाँ ये प्रपोजल करना है और आपको सब्जेक्ट का भी उस बारे में नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, देन विल यू बी रेडी फॉर दैट? कुछ समझ में आया नहीं आया, पहली बात तो ये बताओ। आवाज तो आ रही है ना? यस सर, यस सर। हाँ तो आवाज आ रही है। तो आप लोगों ने तो 6-7 स्टूडेंट ने तो अपना प्रपोजल दिया ही था, 6-7 स्टूडेंट ने तो कहा था। एक बात और बताऊं कि जो कंपनी ने, जब हमारा डिस्कशन हुआ तो कंपनी ने ये कहा क्योंकि आपका सिलेबस हमसे मैच नहीं करता है, क्योंकि कंपनी जो वर्क कराती है वो कराती है कि स्टूडेंट को जब अपनी लाइक ओजेटी पढ़ाई भी कर रहे हो तो और ये तो पहली बार आपको चीज समझ में आई, क्या समझ में आया? बोलिए। अरे आवाज बंद क्यों कर देते हो? बोलो तो सही, हाँ या ना कुछ बोलोगे। नहीं समझ में आया तो बात करोगे, नहीं समझ में तब तो आप लोगों ने यहाँ पर दिया। बोलिए। सर प्रॉपरली Yes, ऑडिबल sir. नहीं था। क्या नहीं ऑडिबल था? मेरी आवाज यस सर। क्या ऑडिबल सर नहीं था? बीच बोलो। यस सर, वीडियो का भी प्रॉपर आवाज नहीं है। वीडियो में तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये है कि वो मान लिया कि हमने सिंपल सी आपसे बात कर रहे हैं कि वो कंपनी क्या कहती है कि कंपनी का आपका जो हमारा जो प्रपोजल है, जो हमने पहले कुछ स्टूडेंट ने एग्री किया था, वो प्रपोजल हमारा आगे चल के रिजेक्ट यूं हो गया कि हमारे जो सिलेबस की कंपेटिबिलिटी उनके ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है। हम भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, जब हमारा डिजायर होती है, डिमांड होती है, तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट यूजलेस है तभी भी हम खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने इस जो मीडिएटर है टैलेंटो को पैसा दिया है। टैलेंटो को पैसा दिया है कि भाई हाँ हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे और यहाँ टीचर्स हमें मिलेंगे, तो टीचर्स और स्टूडेंट मिलके ये हमारे लिए वर्क करेंगे। जब ये स्टूडेंट और टीचर मिलकर वर्क करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो उन्होंने उनको पैसा दिया। अब पैसा देने के बाद अब वो यहाँ पे उनको स्टूडेंट मिले। अब स्टूडेंट कहते हैं कि अब उनको लगा कि मान लिया हम अपने 2 महीने खराब भी करें, 2 महीने इसमें होता क्या है कि देन द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव विल बी एसोसिएटेड, द टीचर विल बी एसोसिएटेड एंड द स्टूडेंट विल बी एसोसिएटेड। सपोज 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और 5 स्टूडेंट इधर कंपनी के ऑब्जेक्टिव के उन्होंने कहा कि बिहेवियर एस्पेक्ट को चेक करना है यंग जनरेशन के लिए। यंग जनरेशन का मोबाइल यूसेज का बिहेवियर एस्पेक्ट क्या है, तो आपको एक क्वेश्चनर बनाना है, सर्वे करना है, सर्वे के रिजल्ट देने हैं और उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर एरिया में क्वेश्चनर भेजना है। भेजने का ये सारा काम वो स्टूडेंट करेंगे और कंपनी यहाँ पे कंपनी आपको एडवाइस करेगी कि हाँ हाँ ये इस टाइप का सर्वे हमें चाहिए, इसमें हमें वर्क करना है, इस फील्ड का ये हमारा रीजन है, इस रीजन का हमें सर्वे करना है और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आप यहाँ पे यंग जनरेशन का सर्वे करके हमें रिजल्ट बताएं। तो आप उसको सर्वे करके रिजल्ट बताएंगे और टीचर विल बी वर्किंग एज ए मीडिएटर। टीचर क्या है कि इसलिए रहेगा कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स को बता सके कि हाँ जो द स्टूडेंट शुड नॉट बी डेविएटेड, कि भाई वो जैसे उन्होंने कहा कि आपको टाइम के अकॉर्डिंगली उनकी मीटिंग अटेंड करनी है। सपोज उन्होंने कहा कि आपकी 5 बजे मीटिंग है तो 5 बजे यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, 6 बजे मीटिंग है तो यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। जैसे ही मीटिंग होती है तो वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव विल बी सपोर्टिंग। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है
ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, तो पहले किसी ने डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में पहले नहीं हुआ है। ये पहला एक्सपोजर है जो हम करने जाएंगे, या हो जाएगा तो हम लोग करेंगे कि हाँ हम इस वर्क को कर पाएंगे। अगेन although this type of exposure is done in the different universities of private big university like Lovely Professional University or Shivnathar University, in the big universities that type of experiments are done to get the teaching learning compatibility. Teaching learning aspect of teaching learning compatibility is required. तो वो वाला कॉन्सेप्ट वहां पे चलता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपका प्रपोजल किया था, जो उसके बाद रिजेक्ट हो गया। तो अब उसमें क्या है कि वो दोबारा अब जो क्या हुआ, कंपनियों ने उनको जो पसंद आया वो सिलेबस दूसरा पसंद आया, जो हमारा पार्ट नहीं है। हमारे उनको सिलेबस पसंद आया ये वाला मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। उनको कंपनी को पसंद आया ये वाला सब्जेक्ट, मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर बिहेवियर, दैट वाज द सब्जेक्ट। अब कुछ समझ में आया है? कुछ आपको कुछ आइडिया लगा? यस सर। यस सर। क्या आइडिया लगा बताओ? अरे यार बताओ, यहाँ कौन सा टेस्ट चल रहा है तुम्हारा? सर ये कि सर वर्क नहीं कर सकते हम लोग उनके साथ, हम लोगों का तो मतलब आगे अगर जब बात होगी तो ये चीज हमारे मेन चीज ये है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मेरी थिंकिंग थी और इस पे मैंने काम करने की कोशिश की। अगेन फेलियर और सक्सेस विल बी टेलिंग। अभी इनको हमने टाइम दिया है 1 महीने का। वो मतलब ये है कि 1 महीने के बाद विद इन 1 मंथ अगर हमारे पास कुछ और प्रपोजल आ जाते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद रूरल मार्केटिंग का अगर हमारे पास कोई प्रपोजल आ जाता है तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर दूसरा जो मैं आपसे कहता है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो है सब्जेक्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट जो कंपनीज इंटरेस्टेड हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर वाले पे इंटरेस्टेड हैं। जो MBA FT का कोर्स है, ये कोर्स जो है MBA FT में पढ़ाया जाता है, तो कंपनी को अपनी कंपेटेबिलिटी वहां दिखाई देती है कि हाँ ये कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, देन द कंपनी इज मोर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर चैलेंज। इसको जो ये प्रॉब्लम देते हैं इसको वो कहते हैं चैलेंज, that they are giving you the challenge, you have to do the survey, you have to give the result, and that is the challenge and you have to fulfill that challenge. ये एक challenge situation है। then you can go on the website also. The website name is that is talento.com. that website name is associated with that particular talento.com. You can see the details of this area in the talento.com, TALENTA, talento.com. Verify this from this talento.com, that is but you should go through। भैया हम आगे चले ना चले, बट आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें सिस्टम में चल रही हैं। तो ये हमें भी पता लगा, तो हमने भी सोचा कि वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ये आइडिया है, और अगर हमें प्रपोजल मिल गया देन वी विल बी मूविंग फर्दर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर हमें रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो दूसरा मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि वो चैलेंज को करते हैं आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आपको और वो भी वही है कि जो स्टूडेंट वर्क कर पाएंगे, मेन चीज ये है कि योर सिंसियरिटी इज प्लेइंग ए वाइटल रोल as well as that your that effort will play a vital role. If you are interested, again, interest is separate thing. Again, apart from that, how much efforts you wish to put over there. But as per my opinion, that you will be learning something which will be an add-on, in your capability and the capacity and capability, if we will be
going towards this particular project or challenge, mainly the challenge. That's all for this. Rest. If you wish to ask something about your course syllabus, वो थोड़ा some part is remaining, I will be discussing. Tomorrow is also class, na? हाँ. Tomorrow is also class, and I will be discussing the remaining part of the organization change. 2 or 3 slides are remaining. We will be discussing this rest of the topic. इस वीडियो को या इस प्लेटफॉर्म को दिखाने का व्हाट वाज माय ऑब्जेक्टिव, दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट द न्यू थिंग्स and you should be aware about that the project, if we will be getting, if we can put our effort only, but success and the failure will be depending upon our effort and the luck. But if we will be putting our best effort, that will be better for us. That's all for today. कुछ आपको मुझे लगता है कुछ न कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ बातें भी समझ में आ गई होंगी. Sir, I have to ask something to you. Sir, as you told me, Yes. Sir, as you told me that the objective of the company is not same as we have syllabus, and so can we take the part in survey of the company or not? This thing I am not able to understand. Can you please repeat the question? Sir, I want to ask you that you told me the company has objective, it's not matched to the syllabus. And Yes. can we take the part of the survey of the company? No, it is associated with the problem. Survey is a separate thing, because here you see that in this area the different companies have emerged, and the same company is there. This company is, suppose in this photograph you are able to see that the company has given same company has given three challenges. You see in this here that one company is there. The company has given the challenges in the different area. Different area means the company are having the multiple objectives, and how these objectives can be fulfilled. Suppose it is associated with the consumer behavior. Suppose it is associated with the marketing aspect. Suppose it is associated with the impact of the marketing strategy or online system. Then for three objective, they have given the three challenges. They have given the three challenges. That the three challenges are there, and according to that, when the interview is there, that my interview was there, I had the discussion with the company, and the company was ready to do the work, and that's why I selected some of the students. But when I sent my syllabus over there, the company told that there is no match with your syllabus, and hence we are discontacting your or we are not agree to work with you. That's why I told I have shown you in the slide that I have accepted the proposal of the company, but after the meeting that was rejected. Now what? Whether your question is that is clarified or something else is there? Yes, sir, I got it little bit. I'm not able to understand if we will take part in the survey or not. Bas, this much. No, this is not survey. As I'm telling you, this is not the survey. This is the work. This is the assignment. That is the depending upon their the task, or that is depending upon their objective. Everything is not associated with the survey. That may be associated with the analysis. They are giving us the data that we have to analyze over there, that we have to get the information through the secondary data only. That is depending upon their problem. Survey is not applicable in all the problems. Survey may be applicable in suppose 5 problems are there. In 5 problems, in 3 problems the survey may be there, but in 2 problems survey will not be there. That is the task. That is the work over there. This is my answer. Okay. Okay, sir. But again, your question is associated with that. Where if we are interested, we can do that. That should be in this way. If we are interested, we can do that over there. Because first Yes, you sir, understand the problem.
whether we can do move over there if you are understanding the problem, because you have to devote your time. We have to devote our time, and that in practical aspect we are not able to utilize, or we are not interested to devote the time in this type of activities or work over there. But here it will be difficult. That's why that the company refused that. Okay, bhai, agar there is the matching of the syllabus, then that will be better. But again, that if we are going to do that, then we have to tell them that no, this is wrong, because they will be only, they are more interested in that the syllabus compatibility there. Reason if that is associate research methodology survey, that is your part of the third semester also, and that second semester you will be also, I think that you are going through the research methodology or not. Research methodology you are going through that. Your subject is there, na? Research methodology. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then that is your part. But this is the practical aspect of the research methodology. Only thing is that the research methodology and the subject both are matched over there, and the company problem is also matched over there. These are the three parts of the aspect. Anything else? Hope I am clear now, and you are also clear. Yes, sir, I got it, sir. Thank you, sir. Anything else? So would No, there be sir. any chance to work with them? Actually, now we are on the platform. You see, this is the market. That here in this particular syllabus, the companies are interested. When I could not get the proposal over there, then I launched this another syllabus also. Okay. Then I launched this another. Suppose this is this is the whole market. Let me show the market. Whatever we are studying over there, there this is the market where the different companies are available. This is the whole market. Different companies are there. We can go again. As I told that you can go through this website also, talento.com. If you find that some company is having the compatibility with our syllabus, you take your syllabus, and if there is any compatibility problem solved, then we can send a proposal. अब ये क्या है? Then these companies are available in the market. Here, either we can send the proposal, or if they are interested, they can send us the proposal or their interest. These are the companies. So many companies are available on this platform. अब ये सारे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, वो ढूंढ रही हैं रिसर्चर को, और हम ढूंढ रहे हैं कंपनी को. और जब जहां जहां हमारी कंपेटिबिलिटी बनती है, जहां जहां कंपनी की और इनकी कंपेटिबिलिटी बनती है, then they are moving for that to the next aspect, next modus operandi. But new generation के साथ, then after the new generation new coming over there, this type of platform has emerged. And again, I wish to tell you that this is a company which is developed by the females. This is developed by the females. I think that the 3 females I had first discussion with them. 3 females are playing a major role in this platform, Talento. This is the platform. This is the mark, and that other companies are provided platform that has been developed by females. And they are earlier they were working in the behavioral aspect. They were giving the training to the individuals, but now they are associated with this type of technology. Can we take the part that again? Hopefully we will be getting. I am trying for that. If we will be getting, that will be more beneficial for us.
but because of our syllabus compatibility, we are unable to get responses or challenges. This is associated with that. ठीक है? Got something? Yes. और कुछ पूछना है? No, sir. Anything else? No, sir. चलिए, मतलब मैंने अपना आइडिया आपको बता दिया। अगर हम आगे बढ़ेंगे या आगे हैं तो आपको जो अपना रेस्पॉन्स देना है, तो बाकी कुछ स्टूडेंट ने तो अपना प्रेफरेंस दे ही रखा है। अगर हम आगे बढ़ेंगे या हमें कोई प्रपोजल मिल गया, then we will be moving in that context. What was my objective? That you should be clear where how we will be working over there. What is the process in that area? You should be well aware about the information technology, and you should be able to devote your time, and you should be eager to learn something new. That's all only my objective. Okay. Thank you, everyone. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. सर जो हम लोग सेकेंड बोलिए। सेमेस्टर के क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होंगे तो एमसीक्यूज होंगे क्या सर? अभी एक्चुअली क्या है कि अभी मुझे हमारे यहाँ अभी डिस्कशन में नहीं आया डिपार्टमेंट में, बट अभी बीएड के एग्जाम चल रहे थे, तो वहाँ पे मैंने पता किया तो उनका जो क्वेश्चन आया है वो उनका जो पेपर आया है वो ऑब्जेक्टिव आया है। तो ऑब्जेक्टिव आया है तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो उम्मीद है हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तभी मैंने आपको ये चीज बता दी कि भाई बीएड के अभी एग्जाम चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनका ऑब्जेक्टिव आया है, बट हमें इस बारे में बताया नहीं गया। अगर हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव आए तो आपको बता तो दिया जाएगा कि 2-4 दिन के अंदर पता लग जाएगा, बट मतलब यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। सर जैसे क्लास टेस्ट वगैरह होंगे तो फिर वो भी में हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे या फिर थ्योरी? देखो ये तो टीचर पे डिपेंड करता है, क्लास टेस्ट टीचर लेता है या क्या लेता है। भाई मैंने तो आपका टेस्ट डिसाइड कर ही रखा, मेरा तो नेक्स्ट वीक है ही है। सर आपका ऑब्जेक्टिव होगा? आप बताइए कैसा होगा। सर अगर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो फिर मतलब एक्चुअली इफ वी आई एम डिस्कसिंग ओवर देयर, you give your opinion to your CR and the final decision will be according to that. जैसे आप लोग कहेंगे मेजॉरिटी के हिसाब से जैसे पता लग जाएगा, और उसके बाद ये ना हो कि भाई आपने जैसे कहोगे वैसा टेस्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके सर ठीक है, कल तक आप डिसाइड कर लें तो मुझे बता देंगे आप कल। Sir, when you make sure, then objective will be there in exam. So I will be decide ki it will be objective or subjective. Then we can decide. I will try so that I'm not sure, but again I will try that tomorrow I will be trying for that. Okay, sir. Thank you. Have a nice day. Anything else? Thank you, sir. Thank you, sir. Nice day to you, sir. थैंक यू सर। सर रिजल्ट कब आएगा? हैं? क्या बोल रहे हैं? सर रिजल्ट कब आएगा?